Good afternoon, everybody. Yes. 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 Just 1 second. Himadrita, 1 Yes. second. Yes. Pavanda, could you start the recording? Recording. Start. Yes. Yes, sir. Go ahead, Himadrita. Okay. Good afternoon, everybody. We have virtually gathered here to pay respect to our very veteran and senior member, Sri Raghunandan Prasad Sharma, popularly known as Sri R.P. Sharma. Mr. Sharma was a very senior member of our association. He was a nice gentleman, very learned person, and really we missed our guiding force of the association. I will request the president of our association, Sri S.K. Tulsian, to pay respect to the departed soul. Honorable Vice Presidents, Sri Haldar Sahib, Ghosh Sahib, Honorable Secretary, Sri Himadri Mukhopadhyay, respected members of my executive committee, my esteemed colleagues, today is a very sad day that we have lost another legendary figure in a very short spell of time. It's a really felt condolence for their family, because one after another we are losing our legends. We lost Nirmal Poddar, we lost our most dear Khokhada, and now our highly respected Sri Raghunandan Prasad Sharma. We all popularly knew him as R.P. Sharma. He was a very learned man, very simple person, very handsome man, a person who believed in life, a person who had huge knowledge of our Vedas and our ethos, who always worked with ethics in his mind, and he was one person who always guided those who went to consult him. He was one of the finest gentlemen I've ever known. I started my practice in the year 1973, and I have seen this towering personality. Wherever he was the leader, always shining star, with his all in-depth knowledge of anything he took up, whether it is a scriptures or law. He became an authority on that. Therefore, he commanded huge respect. He did his BCom way back in 50s from Sanjeev College, and he did his law from Calcutta University. He was born on 1910-29, and he started practicing as an advocate in 1955. He was one of the very senior member of our bar. His legendary colleagues, Sri MP Third and Sri S.L. Kochar, were his classmates in the law college. He was used to live in Salt Lake, and his chamber was 19D Muktaram Babu Street, Kolkata 707. His chamber was like a Tirthasthan, where anybody was welcome to seek his guidance and support. His wife, Srimati Vidya Devi, had predeceased him, and he is blessed with two sons, Nirmal Kaushik and Jitendra Kaushik, who are also member of our bar association. He has briefly last on 4/9/2020. I know this is a very trying moment for the family. I know losing such a legendary figure, whatever be his age, is a great loss, not only to the family, but
to our profession, and our bar also feel poorer with his departure. I don't know how to console my brothers who are the members of the bar and his family on this great loss. But this loss is such that cannot be repaired. Therefore, they have to bear this loss. I pray to God to give them strength to bear this irreparable loss. I also pray to God to give his soul peace in his heavenly abode. With these words, I give it back the mic to my secretary for further proceeding in today's meeting. Thank you. Thank you, Mr. Tulsian. Now I will request our Vice President, Sri Makhon Chandra Haldar, to speak a few words about Sri R.P. Sharma. ইমাদি কোচার সাহেব কি আছেন? আছেন। কোচার সাহেবকে, হি ইজ মাই সিনিয়র মেম্বার, কোচার সাহেবকে আগে দাও। ওকে, তাহলে কোচার সাহেবকে আগে দাও। Okay, may I request Mr. S.L. Kochar, our senior member? Yes, I am here. I am audible. Yes, Yes, audible. sir, yes, sir. Yes, sir. All right. Now I speak something about R.P. Sharma. रघुनंदन प्रसाद शर्मा ये था उसका नाम। 1955 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ से मैंने महावीर प्रसाद थर्ड ने LLB की परीक्षा पास की और अपने वकालत के धंधे में आ गए, और तब से ही मैं इसको देखता आ रहा हूं। और सच्ची बात ये है कि हालांकि पिछले 13-14 सालों से वो वकालत से अलूफ था, क्योंकि उसको थोड़ा सा याददाश्त की कमी होने लगी थी। उस साल में अपने परिवार में अपने लड़कों के साथ रहता था। उसका बड़ा लड़का था, अपना मेंबर भी, एडवोकेट है वो भी। लेकिन उसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ कि 1955 में LLB के बाद में मैंने भी वकालत शुरू की थी। 56 में महावीर प्रसाद भी आ गया था, और हम तीनों ही जहां भी जाते थे मिलते थे, हंसी मजाक करते थे, हाथ मिलाते थे बड़े जोर से, और मेरा हाथ मिलाता था बड़े जोर से, हाथ मेरा दबाता था। मुझे डर लगता था कि इतना ताकतवर आदमी, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा आदमी, खाने पीने में उस्ताद, बातचीत करने में उस्ताद। और मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा कि जहाँ जाता था इसका एक दबदबा था, इसका एक रुआब था। जहां जाएगा वहां जाके सारा काम करेगा खुद ही, लिखनी है, फाइल करना, ये करना, वर्किंग जस्ट लाइक ए मशीन, उसका इतना था। लेकिन एक बात है, कभी भी किसी के बारे में निंदा नहीं करना, सबके साथ में प्यार भाव रखना, सबके साथ मिलनसारिता रखना, और किसी भी प्रकार से उसने कभी भी किसी वकील की वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, ये क्या खाना फूसी कुछ नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने उसको भी खो दिया। अभी कुछ वर्ष पहले मैंने महावीर प्रसाद थर्ड को भी खो दिया। और वैसे एक बात देखें, R.P. शर्मा मेरे से और महावीर प्रसाद और मैं तो एक ही उम्र के हैं, 88 में चल रहा हूँ। शर्मा 3 साल बड़ा हमसे, लेकिन हर चीज में बड़े प्रेम भाव से, सद्भाव से काम करता रहता था। कानून की जानकारी जैसे कि होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, वकील को, ट्रिब्यूनल में भी आता रहता था, बातचीत होती रहती थी, इसी तरह दिन निकलता गया। अब जो चला गया उसके बारे में अगर हम क्या कहें, यही कहें कि उसकी आत्मा जहाँ भी गई है आत्मीयता के साथ में अपने पथ पर अग्रसर हो, उसका परिवार जो है इस दुख को झेले, और हम सब लोग कम से कम इसको अपनी इस श्रद्धांजलि से। धन्यवाद। Thank you, Mr. S.L. Kochar, for paying your respect. May I request Mr. S.M. Surana? Is he there? Our past president, former president. S.M. Surana is there. Actually, I got the news from S.M. Surana. Most probably. Yes, He is not yet joined. Yes. Okay, then I will request our Vice President, Sri Makhon Chandra Haldar, to pay his respect. R.P. শর্মা আমরা যখন প্রথম মেম্বারশিপ নিই, আমি 1980-তে আইটি বারের মেম্বারশিপ নিয়েছি, তখন R.P. শর্মাকে
আমরা লাইব্রেরিতে দেখেছি খুব সিনিয়র মেম্বার এবং খুব লার্নেড পার্সন ছিলেন, কিন্তু খুব সফট স্পোকেন পার্সন, খুব অল্প কথা বলতেন। এবং সে সময় আমাদের ভেতর জুনিয়র এবং সিনিয়রদের ভেতর একটা ব্যবধান আমরা সকল সময় মেনটেন করতাম, যে ব্যবধানটা সিনিয়রদের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা, যে রেসপেক্টটা, সেটা আমরা সকল সময় দেখাতাম। এবং সেইভাবে আমাদের সিনিয়ররা যারা ছিলেন, আরপি শর্মা তার ভেতর অন্যতম, তিনিও আমাদের সেইভাবে জুনিয়রদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখতেন, আমাদের ভালোবাসতেন। লাস্ট বোধহয় লাইব্রেরিতে উনি বোধহয় 15-20 বছর, মনে হয় নট লেস দ্যান 15 ইয়ার্স বাট মোর দ্যান 15 ইয়ার্স, উনি বোধহয় লাইব্রেরিতে বোধহয় আসেন না। ওনার বোধহয় দীর্ঘায়িত অসুস্থতার জন্যই হোক, যে কোনো কারণেই হোক, উনি লাইব্রেরিতে আসা যাওয়া ওনার বন্ধ ছিল। খুবই শ্রদ্ধাশীল পাত্র ছিলেন, ব্যক্তি ছিলেন, শিক্ষিত। সুতরাং তিনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে বয়স হয়েছিল, মানুষকে যেতেই হবে, এটা চিরসত্য। কিন্তু এক এক করে লাইব্রেরির প্রত্যেকে যারা সিনিয়র মেম্বার ছিলেন, প্রত্যেকেই এক এক করে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং আমাদের সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করা আগামী দিনে আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর। যাই হোক, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তার আত্মার শান্তি হোক এবং তার পরিবারবর্গকে ঈশ্বর শক্তি দিন এই শোক ভুলে থাকার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Makhun Chandra Haldar, for paying his tribute. May I request our past Vice President, Sri D.N. Mondal, to speak a few words. Please. Mr. D.N. Mondal. দেখলাম এবং আমাদের মধ্যে দু একটা ব্যাপারে ওনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছিলাম, উনি আমাকে রাইটলি গাইড করেছিলেন। এবং সে সময় আমাদের মধ্যে মাখনচন্দ হালদার যেটা বললেন, সিনিয়রিটি এবং জুনিয়রিটি মেনটেনটা আমরা দারুণভাবে করতাম, যেটা এখনকার যুগে এখনকার সময়তে সেটা অতটা মেনটেন করা হয় না। তা ওনার ওই এত সিনিয়রিটি, ওনার এত পার্সোনালিটি, এত নলেজেবল পার্সন ছিলেন যে আমরা দেখে মোহিত হয়ে যেতাম। এইরকম একদম সর্বনান্ত লক্ষ্মী কোনদিন আমরা হতে ভাগ্যবত নই। এবং ওনার সঙ্গে আমরা মেশার যে চান্স পেয়েছিলাম, আশেপাশে থাকতাম, দ্যাট ইজ আওয়ার গেইন। এবং এইভাবে আইটি বিভিন্ন পিলার্স অফ মাউন্ট আবু, লাইক টু সে ব্রাদার, এরকম পিলার গুলো চলে যাচ্ছে আইটি পার্ট থেকে শূন্য হয়েছে চললো। এই জায়গাটা আমরা কি করে ফিল আপ করবো? পরবর্তী জেনারেশন গুলো এত বড় রেসপেক্টেবল ম্যানকে আর দেখবে না। ইনকাম ট্যাক্স কলকাতার ইতিহাসে এত বড় রেসপেক্টেবল ম্যান খুব কমই আছেন। তা আজকে এই দিনে মিলিত হয়ে সবাইকে দেখতে পেয়ে আমার খুব ভালোই লাগছে। তা আমার তার আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করছি। যেখানেই থাকুন, সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন, এই বলে আমি এবার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. D.N. Mondal. May I request our treasurer, Sri Narendra Kedia, to speak a few words. सुनाई पड़ रहा है? Yes, yes. Yes. ये अभी हमारे प्रेसिडेंट महोदय, सेक्रेटरी साहब और सीनियर मेंबर्स, हालांकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला है शर्मा जी से मिलने का, लेकिन जितना भी मैं इसके पहले भी जान सका हूं और अभी जो जानकारी हासिल हुई है उसके हिसाब से आदरणीय शर्मा जी बहुत एक विशिष्ट वकील थे और आदर के पात्र थे, और हमेशा मेरे मन में अपने सीनियर्स के प्रति रिस्पेक्ट और श्रद्धा का भाव रहता है। और ये अलग बात है कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, है मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन जो भी उनका व्यक्तित्व रहा हो उसके बारे में
मैंने थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी इकट्ठा करी है, उसके हिसाब से बहुत सज्जन और मृदुल भाषी व्यक्ति थे और अपने जूनियर्स के प्रति वो बड़ा ख्याल रखते थे। अब ये मौका है एक होमेज, एक ट्रिब्यूट देने का, श्रद्धांजलि अर्पण करने का, तो मैं अपने दिल से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के सदस्यों को इस वियोग की घड़ी में, दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। Thank you. Whether Mr. S.M. Surana has joined? Not yet. Or Mr. Mr. Soumitra Chaudhary? Mr. Soumitra Chaudhary? No, not yet. They have not joined. Is there any senior member? Anup Ghosh is not. No. He is not there, na? I think yes. Today, no problem. Then I think that may I request his son, Sri Nirmal Kaushik ji, how he has seen his father, because we have seen Sharma ji, a very well-built person, very learned person as a professional. But I will request Mr. Nirmal Kaushik ji, how he has seen his father. Pranam. Pranam to all members of the Income Tax Bar Association. I have learned from my father the ethics under which we present before the Income Tax Department to deal with the clients and learn from legendaries who are the members of the Bars Association. Seniors, had a lot of respect to Kumar Bhattacharya sahib. He had a lot of regard for Chittu Babu, Kokunda, and I have been to Bar Association. My brother Jitendra Kaushik, and an advocate, and myself, chartered accountant, member of Accountants Library, and it used to have other senior members along with Sri Uncle Sonlal Ji Kochar, Uncle M. Mahavir Prasad Ji III, Uncle Sri Madan Lal Ji Agarwal, his companions, and earlier senior member Mr. Tulsidas Ji Kaushik, Mr. Tulsidas Ji Sugla, who became ultimately our tribunal member and senior member thereafter, Advocate High Court, Judge of High Court, Bombay. We have learned a lot from the and our other members, Sri Amitabh Bose of the and Mr. O.P. Sudani, advocate. All of them were the team father, and they paid a lot of respect. And I learned from the assistants from the O.P. Sudani advocate, Sri Amitabh Bose advocate, and I got teachings from his assistant rather from directly. And we are still following that same respect for all my uncles, senior members, and I pay a lot of respect. Mr. Sultan also, mother used to have a lot of love and affection for Mr. Sultan, Mr. Surana, and that much there was more mixing of the senior members amongst others, which we are lacking the second generation with having in the same profession. But still, whenever I come across any senior member or known person, they always used to ask me about the health of my father. After 10 years, he was having some loss of memory, but he was very much hale and hearty and residing with the family. We brothers are very much grateful that the Bar Association has organized this Zoom meeting,
I am grateful. I pay regards to all members and colleagues. Pranam. Thank you. Thank you, Mr. Nirmal Kaushik ji. Actually, Sharma ji is very respected person, and it is our duty to pay respect to the persons, because we are losing these persons, and we are really very sorry. And this trying time, we are trying our level best. Anyhow, whether Jitendra is there? Yes, yes. Yes, Jitendra, please. Jitendra. Pawan, please mute other Yes, persons. yes, yes. Jitendra. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, yes. Yes. Please continue. প্রণাম। সবাই আপনারা সব সিনিয়র আছেন, আর যখনই দেখা হতো সব বাবার জন্য জিজ্ঞেস করতেন ডিপার্টমেন্টে, আর যে কোনো টাইম আমরা পেতাম লাইব্রেরিতে যাবার। এখন তো উনি বাস আমাদের থেকে হাত ছাড়িয়ে চলে গেছেন। বাস I know, Jitendra. I know. Actually, whenever I meet Jitendra on the roads or in the bar, I always ask him that how is Sharmaji. He always Himabjuda. He's actually hale and hearty, but only some memory loss is there. Otherwise, he is absolutely fine. When I got the news from Suranada, it was really a shocking news. Anyhow, we have to bear the loss. By the time we will have to, but his memory will always be with us, and his blessings, his guiding force will be with the Bar Association, I know. Now I will request our committee member Sri Tapos Jana to read the condolence message that we will send to the family of Mr. R.P. Sharma ji. Mr. Tapos Jana. Okay. Yes, thank you. Condolence message. On the 9th day of September 2020, the members of the Income Tax Bar Association Calcutta condoled with deep sense of grief the sad demise of our beloved member Raghunandan Prasad Sharma, who left us for his heavenly abode on Friday, the 4th of September 2020. The members of the Income Tax Bar Association Calcutta convey their deepest sense of sorrow to his bereaved family and pray that the Almighty may give them strength and fortitude to bear the irreparable loss. May his soul rest in eternal peace. Dated Kolkata, 9 September 2020. Sajjan Kumar Tulsian, President, and Himadri Mukhopadhyay, Secretary. Okay, thank you. Thank you, Mr. Tapos Jana. Now we will pay respect to the departed soul by observing 1 minute silence. Thank you, everybody, for joining this virtual condolence meeting.
Jitendra, we will get it signed and we will frame it, and then we will hand it over the controller's message to you. Okay. Thank you. We can conclude the meeting. Thank you, everyone. Thank you for organizing this.